Om Sri Ganeshaya Namaha, Om Sri Saraswati Namaha, Om Sri Guru Paramparaya Namaha, Om Sri Guru Pyo Namaha, Om Sri Chinmaya Sadgurave Namaha. We will start from 2 to 9 shloka number. Kenapi mridbhinnataya swarupam ghatasya sandarshaitum na shakyate ato ghatah kalpita eva mohat mrideva satyam paramartha bhutam. Kena api. Kena here means किसी के द्वारा. किम शब्द पुंगलिंग. So 28 not done. 228. 228. Oh, 228. You did not do it yesterday. Oh, 228. Okay. No, we have done it, Amma. 228. We have done it. कीनापि किसी किसी के द्वारा घटस्य स्वरूपम. The swarupa of the earthen pot or ghatam mrit bhinnataya, different from the mrittika, samdarshaitum, samyak rupena darshaitum न शक्यते, दिखाने में समर्थ नहीं होता. अतः, अतः मीन्स इट्स अ डिसीशन, सिद्धांत. घटः मोहात् कल्पितः एव. The earthen pot, it's a delusion, it's an imagination only. How that imagination comes? From delusion. How that delusion comes? From the ignorance. Mrid eva, the clay alone, paramartha bhutam, paramartha rup, means if you compare the clay with the clay pot, in that comparison, the clay alone is the paramartha rupam. Satyam, mrittika or clay alone is satyam. So, no one can show by demonstration that the essence of a mud pot is other than the mud. Therefore, the pot is merely imagined through delusion, and the mud aspect alone is the enduring reality in the mud pot. The mud pot can never be proved as made up of anything else. A mud pot is mud, whatever be its contents. The mud alone is the pot. The pot has no independent existence apart from the mud. So, the pot is the imagination
of a form and a function in the mud. Similarly, the world has no independent existence from Brahman. It has no independent existence. Among mud pots, the ultimate truth is mud alone, and there is nothing other than mud. The pot is a superimposition on the mud. Now, 230 we will come. Sadbrahma karyam sakalam sadeva tanmatrame tanna tatonyadasti asti teyo vakti natasya mohaha vinirgato nidritavat prajalpaha. What a beautiful sloka. Sadbrahma karyam sakalam sadeva tanmatrame tanna tatonyadasti asti tiyo vakti natasya mohaha vinirgato nidritavat prajalpaha. Word for word meaning we will come. So, sad sakalam, everything, sat brahma karyam, sat sarup brahma ki karya, the effect of sat sarup brahman, which is existence alone, sat evam. So the effect of brahman is nothing but brahman. Etat tat matram. Etat means this world alone. Tat matram. Etat tat matram. What a wonderful thing. This whole universe, etat tat matram. The Brahman alone. What Brahman? Na Sat Swarupa Brahman, which is existence alone. Tataha, from that Sat Swarupa Brahman, Anyat na asti. There is nothing else. यह व्यक्ति जो व्यक्ति अस्ति तस्य मोहः न विनिर्गतः. जिन्होंने बोलते हैं अरे मैं दिवाकर चैतन्य हूँ, मैं ही हूँ और ब्राह्मण बोल के कुछ नहीं है, तस्य मोहः न विनिर्गतः. उनका मोह अभी दूर नहीं हुआ. उन्होंने निद्रितवत प्रजल्पः, सोए हुए व्यक्ति प्रलाप ब्लैबरिंग करते हैं. इट्स लाइक दैट. So too, the entire universe being the effect of the real Brahman,
can be nothing other than it. It is of the essence of that, and it cannot exist apart from that. Anyone who says it does is still under delusion and toddles like one in deep sleep. So the effect that has arisen from the cause, the existence alone means the Sat, can only be the same Sat. The effect is nothing but the cause itself in another form. One pot may be called as Ganga pot, another pot may be called as drinking water pot. The difference is in their usage, but in essence, they are both nothing but the mud. Similarly, in this world, one can be a saint and another can be a sinner. People may have varying degrees of goodness and badness, but they are, in their real nature, which is divine, because they are all the effects of the one Brahman. If anyone insists that there is something other than Brahman, he is not to be blamed, since he is only crying in delusion. His vasanas have not yet left him completely. Any perception of plurality is on account of the vasanas. As long as vasanas exist, so long the mind functions. And the mind can only perceive what? Duality, Advaita Bhavana. He who says that there is some factor or factors other than Brahman is only prattling and meaninglessly. A man in dreams seeing a dream tiger cries out in sleep. On waking up, he himself understands that his shouting was but senseless driveling. Similarly, we asleep to the supreme state know only the body and its ego, and all our experiences are meaningless prattling. Who says? Bhagwan Shankaracharya ji, the man of realization. 231. Brahmaivedam Vishwamityeva Vani Srauti Brute Tharvanishtha Varishtha Tasmad Etad Brahma Matram Hi Vishwam Nadhishthānād bhinnataropitasya Brahmaivedam Vishwamityeva Vani
Srauti brute tharvanishta varishta tasmadetad brahma matram hi vishwam nadhishtanad bhinnataro pitasya. Truly, this entire universe is Brahman. This is the declaration of the Atharva Veda. Therefore, this universe is Brahman alone. For a superimposition has no existence independent of its substrata. Word for word meaning we will go. Idam Vishwam, this world, Brahma eva, only Brahman. इति एव, इसी प्रकार में अथर्वनिष्ठा, in Atharva Veda. Where Atharva Veda? In Mundaka Upanishad. Varishtha. Varishtha means here Mananiya, Sammanya. Srautivani means the words of the Veda, Veda Vakya. Brute, Veda Vakya says that. So, which is praiseworthy, which is respected, that Varishtha Atharva Veda says that this world is nothing but Brahman alone. Tasmad, because of that, he indeed, etat Vishwam, this world, Brahma Matram, Brahman alone. Why? Because Shruti says, finish. Shruti says this world is Brahman alone. Adhishthanat aropitasya bhinnatana. Adhishthan is Satya. Substratum is real only, not the superimposed one. Like on a rope, out of delusion, the snake is superimposed. Before superimposition, at the time of superimposition, and when the superimposition goes off, the rope remains the same rope. Out of delusion, what the snake we see on the rope, that is nothing but the rope alone. In this way, out of ignorance, on the substratum of Brahman, if out of delusion, if we visualize and perceive Jagat and give importance, think it is real, whatever it is, the Brahman remains Brahman alone.
In Mundaka Upanishad 2.2.11, Mundaka Upanishad 2.2.11, Brahmavedam Amritam Purastad Brahma Paschat Brahma Dakshinataha Cha Uttarena Adhoscha Urdham Cha Prasritam Brahmaiva idam vishvam idam varishtham. In front of me, everything is Brahman. Back of me, Brahman. Right side, Brahman. North side, Brahman. Downwards, Brahman. Upwards, Brahman. The Brahman is pervaded everyone. This Brahman alone is the Jagat Sreshta. Shruti says. यहाँ भगवान शंकराचार्य जी अथर्ववेद की अंतर्भुक्त जो मुंडक उपनिषद है, इससे ये उद्धृत दिया है। वैदांतिक ज्ञान की यही अंतिम शब्द है कि सब कुछ ब्राह्मण है। श्रीमद् भगवद गीता में 7th चैप्टर की 19 नंबर श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि अनेक जन्म की बाद ज्ञानी मुझे आश्रय करके यही उपलब्धि करते हैं कि ये पूरा जगत वासुदेव ही है। लेकिन ऐसे ज्ञानी, ऐसे महापुरुष सच में दुर्लभ है। जितना लोग ट्रेकिंग या माउंटेनियरिंग करते हैं, सबके एटलीस्ट 99.99% लोगों का मन में, सबका नहीं, जो लोग माउंटेनियरिंग करते हैं, कि मैं एवरेस्ट में चढ़ूं, उसके श्रृंग में, उसके ऊंचाई में। लेकिन कितना लोग कामयाब होते हैं। लाइकवाइज कुछ कुछ साधक सारे साधकों से ये परम सत्य को उपलब्धि कर पाते हैं। लेकिन ये भी ठीक है, एक दिन न एक दिन हम सबको ये आध्यात्मिक उपलब्धि की ऊंचाई में उठना ही होगा। हम सब लोग उठेंगे, लेकिन उससे पहले संग्राम की जरूरत है। A lot of struggle is required. इस श्लोक में बताया गया है ये जगत अवश्य रूप में ब्राह्मण है। ये जो दिस ये शब्द निर्देश करते हैं सर्वनाम। तो ये दिस ये शब्द के द्वारा पूरा जो व्यक्त जगत है, एक्सप्रेस्ड वर्ल्ड, इसको निर्देश कर रहा है।
किया जा रहा है। हम लोग जब उंगली उठा के बोलते हैं ये, तब किसको दिखाते हैं? ये जो बाह्य जगत है, उसका जो वस्तु है, यही हम लोग दिखाते हैं। ये चाहे वो कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, दृश्य हो। लेकिन ये जो वस्तु, ये जो जगत, इनका असलियत क्या है? वेदांत कहते हैं ब्राह्मण। यही वेद का अंतिम सिद्धांत है। यहां पर अथर्ववेद की बात बताया गया है। लेकिन सारे के सारे उपनिषद में, सारे के सारे वेद की ये एक ही सिद्धांत है। ये जगत ब्राह्मण के सिवा और कुछ नहीं। इसलिए बताया गया कि ये जगत अवश्य रूप में ब्राह्मण है। ये इतना सा छोटा लेकिन इतना पावरफुल जो वर्डिक्ट है, इस श्लोक में अथर्ववेद से लिया गया है। इसी उपनिषद में एक है 3.1.7, जो हमारा देश का भी एम्ब्लेम है। 3.1.7 मुंडक उपनिषद। सत्यम एव जयते न अनृतम। मिथ्या नहीं, सत्य ही जयी होता है, विजयी होता है। भारतीय गण प्रजातंत्र उपनिषद के इस वाणी को ही आदर्श मानते हैं। तो चरम सत्य क्या है? व्हाट इज द अल्टीमेट ट्रूथ? दैट एवरीथिंग इज ब्रह्मन अलोन। सब हम, हमारा आत्मा है। 228 में बताया गया है, मिट्टी का घट, मिट्टी का गिलास, मिट्टी का चामच, सब कुछ मिट्टी के सिवा और कुछ नहीं। मिट्टी ही सार वस्तु 228 नंबर में बताया गया। अगर ये सारे वस्तु टूट जाए, जो रहते हैं वो मिट्टी अलोन। वाचारंभणम विकार नामधेयम मृत्तिका इति एव सत्यम। छांदोग्योपनिषद 6.1.4। मृत्तिका अलोन इज सत्यम। बाकी सब जो नाम मात्र है, विकार है मृत्तिका की। मतलब नाम और रूप अधिष्ठान के ऊपर आरोपित वस्तु है। दे आर ऑल सुपर इम्पोजिशंस ऑन द सबस्ट्रेटम। The substratum alone is truth. If there is no substratum, the names and forms are not independent entity. Brahman or Atma is the substratum. On that, the whole world is superimposed. There is no existence other than Brahman. That is why इतना जोर से बताया गया है, ये जगत अवश्य रूप में ब्राह्मण। The truth is, there is nothing rather than Brahman. Sarvam khalu idam Brahman. And that Brahman
is our Atma, and this is the conclusion of the Veda. See you tomorrow.